Hello and welcome. Very warm good evening to you. Now I can't say warm because it's not a warm time. It's a cold evening, right? Those of you who are based out of Mumbai even could feel. Generally, the Mumbai weather is always very pleasant weather, right? During this time, but during this year, it's quite cold here, right? And you could see that there is a. I'm also even having a cold and cough right now. All right, so warm welcome, and let's start from where we left in the last stock market की बात MJ के साथ में, right? So we talked about some of the expectations, the budget uh, uh, we people have from the budget, and we also had a discussion on how the budget had been in the past, right? We discussed the budget from a time of Mr. Chidambaram, the finance minister during 2013 or 2014. Only 2014, Mr. Jaitley gave interim budget on February 2015, and since then BJP has been producing its own budgets, right? And we also had a discussion that this time the budget would be a growth and growth oriented, yet there are the elections and it may be a populist budget, so at least इसमें negativity नहीं आएगी, अपनी ये बात हुई थी, right? And if you recollect the previous year's budget, that was on 1st February 2021, we saw a huge surge in the market when same finance minister, that means Mrs. Nirmala Sitharaman, presented the budget. We saw in a day 4.74% surge in Nifty, right? And that was a huge surge. Obviously, there was a lot of stimulus packages, a lot of announcement, and it was a gung ho budget about it. But this time in this budget, when we were in the market, because the budget came during the market hours, and though the budget brought a certain kind of volatility in the market, but it was still a very calm environment. The point by point, what we saw in the budget was completely a balanced budget, growth oriented budget. There were no freebies, and that was something which everybody was expecting it to be a populist budget, right? But then the budget was completely uh, not a populist, at least. So it had a lot of announcement. We thought there will be some tax rebates for the salaried people, as well as for the people who are like you and me, who are earning from the stock market as well. So in terms of short-term gain or long-term gain, we'll get certain benefits, maybe STT removal, or maybe commodities tax removal, or maybe the parity between capital gain in listed shares as well as unlisted shares. तो ऐसा बहुत सारा चीज था, हम लोग ने सोचा था कुछ सेक्टर्स में लाइक फार्मा सेक्टर में एपीआईज के लिए अच्छे बेनिफिट्स होंगे, या पीएलआई स्कीम वो एक्सटेंड होगी, राइट? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. तो लेकिन वो इतना कुछ हुआ नहीं वो. बट बजट का जो मेन फोकस रहा, दैट वाज completely on new businesses, growth oriented budget, right? So what did we get? In fact, agar hum usko summarize kare, because this is the theme in which we will now have new course of action for our investment. In fact, some of you might have already initiated for longer period in which sectors you want to invest from it. So one of the things what we noticed was the finance minister was very clear about digital banking reforms. So there were no benefits to rural areas other than, that means there were no freebies, right? कोई किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज नहीं हुई. But almost 1.5 lakh post offices where most of the time uh, the farmers keep their money as a fixed deposit, right? तो उनको अभी बैंक के साथ में लिंक कर दिया जाएगा. So that means that they can see their deposits, their growth, or whatever they want to, and they can encash through the bank as well. So that was something very good. Apart
Apart from that, they will also be creating 75 digital banking units. That was an announcement. So banking sector was taken care, the agricultural aspect was taken care, so that sector will be benefited from this new move. Apart from that, there was an expectation maybe related to the legislation on cryptocurrencies or digital currencies. Regarding that, there were two things which happened. One, the finance minister said we will be launching, the RBI will be launching a blockchain based digital currency. Maybe it will be backed by rupees or dollars or some stable currency, right? दो ही currencies हम लोग ज़्यादा use करते हैं इंडिया में. So that was related to cryptocurrencies or digital currencies. Apart from that, one more thing was recognized by the finance minister, that cryptocurrencies is a tradable instrument in which people are trading. They didn't say that they are legalizing it under this legislation, but they said they will be taxing 30% gain from your earnings through the digital currencies or cryptocurrencies. That means it has come under recognition, one aspect, right? And if it has come under recognition, then there might be in coming time some or other legislations coming up, right? So that's the one good aspect which has happened. So इनकम आप कैसे भी कमाओ, गवर्नमेंट आपसे टैक्स तो वसूली करने ही वाली है, राइट? So that was the another point. And then we also saw a one good move that जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा, which will be national digital healthcare ecosystem. That means all the health care providers or the facilities will be enlisted there, right? And this will be available to the general public. फ्री नहीं किया, ये मत सोचना कि फ्री होएगा वो, but then it is there now. That means you will be knowing what's around you, and it will be also governed, the facilities will be governed by the competent authorities. Apart from that, they will be creating 23 new telemental health centers. Now, during the pandemic, we saw a lot of people went through the distress, a lot of deaths or unforeseen circumstances came. So people needed a emotional and psychological support. So for that, the government has created certain centers in the past, but then there is a special enhancement and care which has been taken care in this budget. So that's another good move. There is also a support for infrastructure sector. So what was the new plan for infrastructure was they created a scheme called Gati Shakti Master Plan to boost all kind of transportation, roads, sea, or flights, every aspect of it. In addition to that, they declared that in coming financial year, they will be creating 25,000 kilometers of new roads. That's a one-year target. That's a very ambitious target. And under the leadership of Mr. Gadkari, Nitin Gadkari ji, it is actually happening. It's been a very, very fast, and it's an implementer, right? So that's a good news for the infra sector. So the companies in infra sector, you could look at L&T or KNR Construction. Look at the companies which are into infrastructure business and whose fundamentals are good. So these two names are just always on my mind, and I'm also invested in a good amount in these companies for a long period of time. So that's one aspect of it. So what more came in a budget was incentive for the startups. So startup के लिए जो incentives थे वो already थे ही थे, but they have been extended up to 3 to 4 years. So that's good news for the startup. So if you are thinking of starting up a new company, you will get incentives, tax rebates. Apart from that, easy loans under SME segment you will get, right? So that's good aspect of it. Not a good news for the capital market participant or the stock market participants, but indirectly thoda bahut ek relief tha, which says that the surcharge on your capital gain from the capital market
on listed or unlisted shares will be capped at 15%. So that's uh, okay, good news, not very big news, right? So what else came in the budget was the education, uh, the focus on education system. The government has recognized that in the coming time there will be a lot of online educational systems required. So one new university, digital university, they will be setting up. This is a good aspect of it. Apart from that, there is a program called one channel one TV scheme, right? So उसमें currently 12 channels हैं which have been now expanded to 200 channels, right? So that's another aspect what government has brought in this budget. So अगर इसमें देखेंगे तो आप भी कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं था जिससे कि उन्होंने वोटर बैंक को खुश करने के लिए कुछ ऐसा दिया हो. Now, definitely that kind of move is appreciated by economists, growth oriented people, or even the stock market, right? So we saw a surge of 1.37% that day. So Nifty, if you look at, let me share the chart with you so that you get a sense of it, right? So this is a Nifty chart, and this a long hammer kind of candle was formed that day. So obviously, budget day is always a volatile day. People have taken speculative bids before that, and they have moved both the sides, right? So जिनको लगा कि भाई budget खराब नहीं हो, see there was short position as well as long position in traders term, right? तो उन्होंने अपनी position cut off की यहाँ पे. So we saw a very bullish candle here that day, right? So that's Nifty. Now, if you see from the market perspective, जरूरी है market में आप कहाँ पे खड़े हो. So the market had made a 18,604 का high point, which was there on 19th October, right? So तब से लेके मार्केट में करेक्शन हुआ एंड वी सॉ समवेयर अराउंड 12% के आसपास का डाउनसाइड हमने देखा. उसके बाद में मार्केट मूव्ड अप एंड इट मूव्ड अप बिफोर द बजट फॉर द ऑलमोस्ट 18,350 पॉइंट के आसपास में हमने मार्केट को देखा एंड देन वी सॉ अ सडन डाउनसाइड मूव एंड ये ऑलमोस्ट पूरा एक 5 दिन लगातार डाउनसाइड मूव था. was a little scary because the kind of the candles it made were very bearish candles, right? Partly the reasons were Russian-Ukraine war-like situation. Federal Bank of America was giving a commentary which was always talking about reducing the supply of the money, increasing interest rate. वो सब इधर फिर इस 5 दिन में डिस्काउंट हो गया, right? So now that is well known. मार्केट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज हुई यहाँ पे, हमारा जो ऑयल था वो $90 पर बैरल पहुंच गया. सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द स्टॉक मार्केट और इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. एंड स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट अ बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमी. सो वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिला, राइट? एंड देन फिर ये थोड़ा प्री बजट रैली यहाँ पे थोड़ा जो हमको देखने को मिली वो मिली. एंड राइट नाउ द मार्केट इज अगेन लास्ट 2 days it's been downside, but downside is capped at this point of time. Now, if you look at from the all-time high to the current market of where Nifty is at 17,116, you got almost you are 6.2% down from the all-time high. That means we have got almost 6.2% upside from the current level. अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई वाज 41,831 और 830. सो वहां से अगर हम बैंक निफ्टी का आज का डेटा देखते हैं तो दैट टुडे द बैंक निफ्टी इज 38,787. दैट मींस we have got almost 7.8% upside in bank. So bank nifty is still lagging in terms of the up move, right? And जिस टाइप के बैंक में रिफॉर्म्स हुए हैं, आई एम श्योर इन कमिंग टाइम बैंक निफ्टी विल बी मूविंग अ लिटिल फास्टर देन निफ्टी. So now if you see the chart of nifty as well as bank nifty juxtaposing to each other, then you would see the bank nifty has shown a very good growth. क्योंकि वो जो प्रीवियस हाई था ये वाला यहाँ पे
बैंक निफ्टी ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहा है, जबकि निफ्टी प्रीवियस हाई ऑफ 18,350 के आसपास का उसको टच भी नहीं कर पाया अभी. सो यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक निफ्टी. Always look at what is happening in your environment related to the banks or the industries or the sectors, and you will see the reflection of that in the indices. चाहे वो निफ्टी का इंडेक्स हो या बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो या निफ्टी आईटी और निफ्टी फाइनेंशियल का इंडेक्स हो. So that shows how the markets are moving, and you get an opportunity to make your positions accordingly. अगर आप ट्रेड कर रहे हो या स्विंग ट्रेड में हो, इंट्राडे ट्रेड में हो और पोजिशनल ट्रेड्स में हो, तो you should always look at which index is moving faster, which index has got more power, more strength, then take position accordingly. Now if you look at, let me also share something which been working on, right? So let's say Nifty indices, right? निफ्टी के ऑलमोस्ट 16-17 सेक्टर को लेके इंडाइसेस बने हुए हैं. सो आई हैव मेनली कैटेगराइज दोज इन 8+8. तो 16 इंडाइसेस को मैं ट्रैक करता हूं निफ्टी के, जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, राइट? सो लेट मी ओपन दोज इंडाइसेस. अगर चार्ट खुलेंगे तो 8 चार्ट एक साथ में खुलेंगे और आपको बड़े छोटे छोटे दिखाई देंगे. So you can expand that and you can make a dashboard like what I have created. Okay, so you'll have to customize this particular app, which can easily be done. And this app is freely available on internet. आप investing.com देख के यहाँ पे बहुत सारे sectors को parallelly track कर सकते हैं. So as of now तो data नहीं आ रहा है. So these are different sectors. You would see कि PSU बैंक का जो sector है वो काफी time से अच्छी मूव दिखा रहा था. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो बजट में अनाउंसमेंट किए उससे ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है? पीएसयू को, राइट? तो वो तो पीएसयू का इंडेक्स हमको देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा था, सबसे स्ट्रांग है. बैंक में प्राइवेट बैंक्स से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है पीएसयू बैंक का इंडेक्स. तो ये सब इंडाइसेस हैं. PSU bank, private bank, financial sector, service sector, consumption, FMCG, PSE, CPSE. So let's just focus on this, and that would very clearly show those of you who are technicals or who are my students. You can understand it has made a inverted head and shoulder. That's a bullish pattern. The targets are very clear. Now it is making a double top and it's in a distribution zone. In a distribution zone, it has made a inverted hammer, or you can say shooting star kind of pattern, right? So some more correction to the level, but from there it may start again its up move. So it's not about your stock alone, friends. Sometimes you ask a question, but that question needs to be replied not only on one factor. टेक्निकल एनालिसिस एक एस्पेक्ट है, फंडामेंटल एक एस्पेक्ट है, सेक्टोरल एनालिसिस दूसरा एस्पेक्ट है, इंडस्ट्री एनालिसिस तीसरा एस्पेक्ट, उसमें फिर सप्लाई डिमांड क्या चल रहा है, राइट? हाउ इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैपनिंग इफ एट ऑल इट इज इन्वॉल्व्ड इन. So lot many factors are involved in the equity market. So pay attention to all aspects, right? That is where all the time I say keep on learning. It's not so easy field. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप आओ एंड बकेट भर के लेके जाओ यहाँ से पैसा. The market gives a lot of money for sure, but only to those people who are well learned and they are independent. They do their own analysis. दूसरे के एनालिसिस से आपको पैसा बनेगा कोई गारंटी नहीं है. Most of the time you will be losing the money. So there is no option. If you follow Saraswati ji, Lakshmi ji will always follow. It's a known fact. You see from the beginning. So, but most of the time people are following Lakshmi ji but not Saraswati ji. So my invitation is to start looking at that. So this is one aspect of it. Apart from that, apart from looking at the Indian indices, you should also be looking at world indices, right? World indices, what is happening in the international market? If you look at this week itself, right, we saw the Facebook shares dropped more than 20%. Now that has a huge impact on NASDAQ. NASDAQ में हमारी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, राइट? और यूएस में हमारी भी बहुत सारे कंपनीज के
एडीआर ट्रेड हो रहे हैं, राइट? तो उसका इम्पैक्ट भी तो अपने मार्केट पे आएगा ना. सो यू सॉ देयर वाज अ ड्रॉप इन आर आईटी सेक्टर एज वेल, राइट? एंड हमारे मार्केट में भी ड्रॉप आया. सो इफ यू सी दीज आर द फ्यू इंडाइसेस, चाहे वो नास्डैक होने दो, चाहे S&P 500 होने दो, डाउ जोन्स होने दो, डेक्स जर्मनी होने दो, FTSE लंदन होने दो, और CSE फ्रांस होने दो. कम से कम इतने इंडाइसेस को तो आप ट्रैक करें. जैसे नास्डैक के अगर ऊपर हम बात करते हैं, so you could see that there is a huge drop in Nasdaq because some of the companies did not have a good result. Nasdaq is made of mostly technical companies, and among them IT companies are the major, right? So all those companies resultant is this. So there is a huge drop in Nasdaq for a long period of time, more than a month now. It's the index is under pressure. So are companies, right? So that also you need to look at. ठीक है? तो इतनी सब चीजें देखें, उसके बाद में फिर आप इन्वेस्ट करें. ऐसे इन्वेस्ट मत करें. All right, so let me take your questions, right? But before that, let me have our index applied, or you can also follow Ritik stocks. What are the Ritik stock? I'm sure you might be knowing. So when you are in the market, if you are an intraday trader, look at these 7 stocks. These stocks are the heavyweight stock of Nifty. So if these stocks are on the downside, you cannot expect Nifty to move upside. Similarly, banking sector के stocks को देखें, right? So these are the SDFC, Reliance, Infosys, Tata Consultancy, Housing Development, ICICI and Kotak. That makes what is a short form of Ritik, right? तो यहाँ से ही आता है Ritik. तो ये stocks को भी देखें. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कल अगर फ्राइडे में देखेंगे आप, तो सारे के सारे स्टॉक डाउन थे. तो ऑब्वियसली अगर आप ये राइट साइड में इसको देखेंगे निफ्टी को, तो इसको तो डाउन रहना ही था. सो ऑलवेज मॉनिटर heavyweights and the sectors. That will give you a gist of what is happening in the market. Otherwise आप बिना निशाना लिए हवा में गोली मार रहे होंगे, राइट? तो उसका कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं. You would not be able to shoot the target. All right, so let me take your questions. Give me a minute. There are many questions, and the latecomers के लिए good evening, right? So Nilesh has shot his question. Dredging Corporation. Nilesh, let me see. I don't think इसका मेरे पास में पहले से चार्ट है ना. So let me open a single chart, and उसके बाद में मैं ये चार्ट उसके ऊपर ओपन करता हूँ, and then we will see that part of it. लेकिन उससे पहले इसके फंडामेंटल्स पे एक नजर डालते हैं, राइट? सो 491 की बुक वैल्यू है, 368 की करंट प्राइस चल रही. सो अंडर बुक वैल्यू के हिसाब से तो एटलीस्ट ये अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है. वन एस्पेक्ट. सेकेंड, इसके पी का कोई पता नहीं है. रिटर्न ऑन इक्विटी -11.6% है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -0.763% है. दैट इटसेल्फ सेज कि दूर रहो. सेकेंड, इंटरेस्ट कवरेज माइनस में है. दैट मीन्स इट्स नॉट एबल टू सर्व इट्स डेट, एंड इट हैज अ डेट ऑफ 0.16%. मतलब इक्विटी का 16% डेट है इसके पास में. सरकारी कंपनी है और नेवी के लिए काम करती, मोस्टली पोर्ट्स वगैरह के लिए काम करती, राइट? सो मेरे हिसाब से अनलेस अंटिल यू अंडरस्टैंड 1031 करोड़ की कंपनी है, 591 करोड़ का इसके पास में कैश रिच कंपनी है दैट वे. सो एंड इट हैज आल्सो रिड्यूस्ड इट्स डेट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग 74%. 2% DIs के पास में. इट यूज्ड टू बी 8.8%. दे हैव रिड्यूस्ड. FIs के पास में 0.25% था. दे हैव रिड्यूस्ड देयर स्टेक. इट्स ओनली गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक. पब्लिक के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में टाइम नहीं है बिजनेस को बढ़ाने का. तो विशाखापट्टनम पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है,
सो यही सपोर्ट्स वगैरह हैं. सो स्टे अवे, यू माइट गेट बेटर ऑप्शंस टू इन्वेस्ट. फ्रॉम द चार्ट पर्सपेक्टिव, अगर आपको खाली टेक्निकल के बेसिस पे पोजीशन लेनी है, तो अलग बात है. लेट मी सी दैट पार्ट वेदर इट इज टेक्निकली स्ट्रांग. Oh, so what attracted you is Wednesday's move, right? Very volatile stock, right? Move होते हैं तो बहुत बड़े होते हैं, and otherwise, so technically, मतलब distribution zone में you might see more sell side on it, right? अगर आप बात करेंगे तो it's a trading about a 50 period moving average. I think it might also be trading about 200 days. 50 के ऊपर है तो शायद करेगा ही करेगा. बट मेरे ख्याल से वॉल्यूम अगर आप देखोगे, लेट मी शेयर दिस चार्ट विद यू. अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो यहाँ पे रेगुलर वॉल्यूम नहीं है, तो टेक्निकल बेसिस पे भी मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आपको ऐसे स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए. तो मेरी राय रहेगी कि अच्छे स्टॉक ढूंढे आप. इन्वेस्टर बेट ऑन पेनी स्टॉक, वन ऑफ योर फेवरेट पेनी स्टॉक वी कैन इन्वेस्ट. So, Nilesh, umpteen number of time I told you I don't even discuss penny stock. I'm not invested in any penny stock. I don't intend to invest my time to study even any penny stock. My first criteria of choosing a stock is it has to be above than 100 rupees. Less than that, I will not be even looking at it. So I don't have any gift to give you as a penny stock. And my advice is to stay away. Mostly, they will be manipulated. The fundamentals are not clear. माइक्रो कैप के स्टॉक्स होते हैं, कोई दो आदमी भी घुमा सकते हैं वो स्टॉक को. आप फंस जाओगे लोअर सर्किट अपर सर्किट में. क्यों पैसा फंसाना है? ललित जी, गुड इवनिंग. गोदरेज प्रॉपर्टीज, ललित जी आपका सवाल है. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक. मीडिया इसको बस प्रमोट कर रहा है. मेरे ख्याल से दे कंसील्ड इन्वेस्टमेंट प्लान टू डीबी रियलिटी एंड ऑल. सी, एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ. लर्न हाउ टू बी फंडामेंटली checking the stocks. If the company has good fundamentals and the management is good, you would see the stock growing. Okay, so instead of Godrej Properties, there are better companies where you can invest. Search for them. There is a scanner within investing within this screener.in. इसमें आप स्कैनर लगाएं, रियल एस्टेट के कंपनीज को ले लें, एक एक करके उनको एनालाइज करें. यू विल फाइंड देयर आर बेटर कंपनीज, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है एंड अंडर वैल्यूड है. गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड, तो रिटेल वाले को उधर कुछ मिलने वाला नहीं है. प्रमोद जी के सवाल बहुत सारे हैं. एनसीसी एंड ब्लैक रोज. सो एनसीसी, प्रमोद, अगर मैं बात करूं आपको एनसीसी की, तो आई हैव quite some time back exited from NCC. See, as a retail investor or trader, you have got a very limited capital. So you need to find out a choice कि मैं invest कहाँ करूँ. Comparatively, आप यही sector के, NCC is into infrastructure projects. अगर आप NCC का vis-a-vis KNR construction का stock देखेंगे, so it's not my recommendation by the way, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूँ. तो यू वुड फाइंड KNR इज मच मोर बेटर प्लेस्ड, राइट. यहाँ पे आप सेल्स ग्रोथ देख लो, डेट देख लो, 5 साल का प्रॉफिट देखो और बाकी के पैरामीटर्स देख लो. प्रोमोटर इज होल्डिंग ओनली 20%, राइट. So this stock never sees that kind of growth what other stocks see. Look at from the time 4th January 2018 के आसपास में it was all time high 224. कितना साल हो गया? 2008 वर्सेस नाउ, एटलीस्ट 13 साल हो गया. 13 साल में कहाँ गया है?
versus another stock. Now when you see this side, you are also seeing your peer comparisons here, right? तो इसमें आप चाहिए तो पीएनसी इंफ्राटेक देख लो, केएनआर देख लो. Now look at the chart of KNR right here, and then see the overall growth from the time of the inception of the company, and then you would see, means you need to look at the fundamental of the company, the business of the company, the management of the company. Can you see the kind of growth from 2008 March it has shown you? This is a company I've been investing, and throughout I've been telling people the fundamentals are strong. It's Hyderabad based company, major project करती है. Look at the fundamentals, excellent fundamentals हैं. Small cap की company है, 8,759 की, and look at free cash flow है इसके पास में. डेट टू इक्विटी ठीक है 0.63 का है, बट प्रॉफिट 5 साल का 29% है, 5 साल का सेल्स ग्रोथ है 19% का, 10 साल का 11% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट 10 साल का 21.5% का है, राइट. एंड अगर आप फेयर वैल्यू के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, 450 450 रुपए की फेयर वैल्यू है, विच इज हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 77 रुपीज. तो अंटिल देन यू कैन बी इन दिस बिजनेस. You can own this business, and after that again look at the fundamentals. उसके बाद में क्या है? Now the same time you look at who are the promoters, what percentage. Promoter is holding almost 52%. FIs were 3% in 2019, now they are 4.5%. DIs were almost 30%, they are now 34%. That means FIs और DIs ने पोजीशन बढ़ाए हैं यहाँ पे. पब्लिक 12% थी, पब्लिक 9.93 में है, मतलब पब्लिक ने थोड़ा बेचा है. बट प्रमोटर ने फ्रॉम 2019 टू 2020 तक सेम रखा. 2020 नॉट इनफैक्ट जून 2021 में दे सोल्ड सम स्टेक. मे बी दे नीडेड कितना 3% 2% के आसपास में, 0.25% उन्होंने अपना स्टेक बेचा है. दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. दैट मींस दे आर स्टेबल हियर. That means their skin is in the game. Okay. Now, रही बात आपकी black rose की. I have no clues about black rose. I generally prefer red rose. Let me see what this company is all about. Engaged in a business of distribution and manufacture a wide range of specialty in performance chemicals. So maybe catalyst है कि क्या है मालूम नहीं. So it needs to be seen more from the business perspective, as I'm not aware of this company. ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा इसका डिटेल्स नहीं पता है कि ये क्या बिजनेस है, कौन ओनर है इसका, प्रमोटर मेन प्रमोटर कौन है. बट स्मॉल कैप है, 1055 करोड़ की कंपनी, फ्री कैश फ्लो है, नो इश्यूज. करंट प्राइस इज ऑलरेडी 10 टाइम्स. सो करंट प्राइस अगर 10 टाइम्स है तो मैं उसको ऐसे भी नहीं छूऊंगा. इंडस्ट्री का पी 41, इसका पी 30. ठीक, सो है, ग्रोथ का चांस है उधर. आरओसी आरओई एक्सेलेंट है, मोर देन 30 है दोनों, विच इज गुड. फेस वैल्यू इसका मतलब कई बार स्प्लिट हो चुका है, फेस वैल्यू 1 रुपए की है, डिविडेंड कुछ खास देती नहीं है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, नो इश्यूज ऑन दैट फ्रंट. अगर इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे आप तो आई थिंक 200 के आसपास की फेयर वैल्यू है. तो फेयर वैल्यू के आसपास में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है. अगर वहां पे ट्रेड कर रहा है तो ऊपर जाने का स्कोप. अभी देखो, इसको अगर कोई लंबे टाइम के लिए रखना चाहेगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि भाई उसको 100 रुपए की चीज कितने में मिल रही है. अगर 100 रुपए की चीज मुझे 40-50 रुपए में मिल रही है तो मैं खरीदूंगा. 100 रुपए की चीज मुझे 2000 रुपए में 1000 रुपए में मिल रही हुई तो मैं नहीं खरीदूंगा. सिंपल सा लॉजिक है ना. तो यहाँ पे ऑलरेडी शेयर महंगा हो गया है, इसके लिए लोग और ऊपर खरीदने में प्रोफेशनल्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे. ना अगर आप यहाँ पे प्रोमोटर देखोगे, प्रोमोटर 75% है, एफआईज नील है, सिर्फ पब्लिक है. एंड ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक मार्केट की बात एमजे के साथ ऑन सैटरडे वी टॉक अबाउट दिस. जहां पे पब्लिक हो हट जाओ वहां पे. आपसे और मेरे से ज्यादा स्मार्ट है डीआईज एंड एफआईज. आपको लगता है आप उनसे अच्छी रिसर्च करके लेके आ पाओगे? उनका फुल टाइम जॉब है ये. सो ऑलवेज ensure that aspect कि आप जो रिसर्च भी करके ला रहे हो तो अंडरस्टैंड. इफ दे आर नॉट देयर दैट मींस दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड इट.
वो एग्जिट कर चुके हैं, बिकॉज जो भी छोटा मोटा उनके पास में क्वांटिटी था जो ट्रायल के लिए उन्होंने लिया होगा, इवन वो उससे एग्जिट करें, बिकॉज दे अंडरस्टैंड इट्स एक्सपेंसिव स्टॉक नाउ। ठीक है, सो अभी आप चार्ट के पर्सपेक्टिव से तो देखो, अगर मैं ब्लैक रोज का चार्ट देखूं तो यू आर टॉकिंग अबाउट द स्विंग पोजीशन। तो पहली चीज, महंगी चीज में अगर आप स्विंग पोजीशन लोगे तो लोग बेच रहे होंगे, आप खरीद रहे होगे, और ऊपर जाएगा क्या? सी, अगर आप पिछले 3 महीने का भी रिकॉर्ड देखोगे तो ये ऑलरेडी एक रेंज में फंसा हुआ है। 3 महीना छोड़ो, आप 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना, इसका मतलब है कि अगले आने वाले कई महीनों तक आपका पैसा इधर फंसा रहेगा। आपको पैसा फंसाना है, डेफिनेटली। दूसरा, ये वोलेटाइल स्टॉक है, वॉल्यूम कंसिस्टेंट नहीं है, एवरेज वॉल्यूम से नीचे रहते हैं लंबे टाइम से, ये साइडवेज मार्केट में है, सो अवॉइड दैट स्टॉक। बलरामपुर चीनी मिल्स लॉन्ग टर्म, बलरामपुर चीनी मिल्स, लेट्स सी। So I'm actually far off from चीनी मिल कंपनीज, ओके। आप पूछोगे क्यों, तो मैं बोलूंगा डॉक्टर ने मना किया चीनी के लिए। बलरामपुर, so all these sugar mills, they've been very aggressively bullish because of the ethanol, right? When government started um, allowing more and more mixture of ethanol in petrol, so obviously these are the people who produce ethanol, right? So they have already run up very nicely. As of now, again, it is looking like bullish from this perspective, but fundamentally आप बलरामपुर को देखो, बलरामपुर चीनी, एंड आई एम श्योर इट माइट हैव बिकम एक्सपेंसिव बाय नाउ, क्योंकि बहुत लोगों ने एंट्री लिया रहेगा, नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव। P19 का है, इंडस्ट्री के पी से ऊपर चल रहा है, सो अगर आप बुक वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत महंगा नहीं हुआ है। सो आपको 1 रुपए की चीज 3.5 रुपीज में मिल रही है, विच इज ओके इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। लाइबिलिटी जो है, कंटिजेंसी बहुत छोटी है, फ्री कैश फ्लो बहुत एक्सेलेंट है यहाँ पे। फेस वैल्यू 1, इट मींस स्प्लिटेड मेनी टाइम्स। ग्रोथ डाइल्यूट हो चुका है वैसे तो, ग्रोथ अच्छी है सेल्स की एज वेल एज प्रॉफिट की, 5 साल की तो अच्छी है, 10 की तो नहीं बोल सकते हैं। प्रोमोटर्स आर होल्डिंग लो 42%, एंड प्रोमोटर्स आर बाइंग द स्टॉक, दैट्स अ गुड एस्पेक्ट। ठीक है, अगर आप फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मेरे ख्याल से इसका 450-500 के आसपास का फेयर वैल्यू होएगा, तो दैट शोज प्राइस का इक्वेशन ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं है ना। लुक एट योर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। सो शेयर होल्डर्स ने अपना जो प्रोमोटर है उन्होंने बढ़ाया है, एफआईज ने 1% रिड्यूस किया है, डीआई ने बढ़ाया है, और पब्लिक ने 30% से 21% में किया। तो ये तो यहाँ पे एक स्टेबल दिख रहा है इसमें कि सबका पार्टिसिपेशन है, राइट। तो हमको स्टॉक में भी वो मोदी जी जो बोलते हैं ना, सबका विकास सबका साथ, तो यहाँ पर भी देखना चाहिए आपको कि भाई कम से कम डीआई और एफआई का साथ होए आपके स्टॉक में, तो ही एंट्री मारो, बिकॉज दोज आर द ओनली पीपल हु कैन अलाउ द प्राइस टू बी स्टेबल। ठीक है, नाउ अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका चार्ट देख लो कि किस लेवल पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए है। So, because you're talking about the long time, so we'll be looking at the weekly chart, right? So what you can do is, to start with, you can buy from here, not in a single shot. आपकी buying should be in a staggered manner, and you might see whenever there is a correction in the market, this would come towards 375 के आसपास में. So there is a 40-50 points का downside possible in this. So
स्टैगर्ड मैनर का मतलब क्या होता है कि अभी सपोज करो आपको टोटल 100 स्टॉक का बजट है, तो 10 आपने अभी ये प्राइस पे ले लिए, थोड़ा अभी गिरता है प्राइस तो 10 और ले लिए। अगर 475 तक यू कैन कीप ऑन एडिंग अप 10 10 10 करके, एंड देन यू विल सी योर एवरेज प्राइस हैज कम डाउन समवेयर अराउंड 400 के आसपास में, या 390 या 395 के आसपास में। सो दैट कुड बी वन गुड स्ट्रेटजी, दैट्स द स्ट्रेटजी मोस्ट ऑफ द टाइम आई फॉलो। ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। मानसी गंगावने का सवाल है, विप्रो स्टॉक प्लीज सजेस्ट। विप्रो विप्रो लेट मी सी विप्रो का चार्ट, राइट। आईटी में देयर आर बेटर कंपनीज देन विप्रो। अभी क्योंकि इसकी प्राइस कम है, बहुत लोग को लगता है कि ये 2000 तक जाएगा तो उनको बहुत फायदा होगा, राइट। सी नाउ विप्रो की ये चार्ट है। लास्ट टाइम जब भी हमने बात किया था, वी सेट कि अगर ये लेवल टूटेगा ना तो ये 525 के आसपास में आएगा, और अभी ये बुलिश नहीं हुआ है। विप्रो इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड एंड यू माइट सी 520 525 के आसपास में, एंड इफ दैट लेवल गेट्स ब्रोकन 464। ना क्यों होता है ऐसा? कुछ तो कारण होगा ना कि जबकि इसी जगह पे अगर आप टीसीएस को देखेंगे, टीसीएस का चार्ट देखो, has the TCS chart also followed the same trajectory, same sector का, right? And that is also reputed company. No, TCS वैसे M पैटर्न बना के नहीं बैठा हुआ है, it's already in a bullish territory। आता है वो चैनल पे सपोर्ट लेता है, ऊपर चले जाता है। That also you need to see। Another stock you see here, see I can tell you in a single line, Wipro is an expensive stock at this price। आप मानोगे नहीं, फिर भी आपकी साइकोलॉजी बोलेगी नहीं तो 400 रुपए का स्टॉक है, सर बोल रहे हैं कि 1500 रुपए 1400 रुपए का स्टॉक अच्छा है इससे। सो बेटर यू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। नाउ इफ यू लुक एट एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने भी एम का पैटर्न बनाया, बट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। इट हैज नॉट ब्रोकन दिस एंड गॉन। अगर इसको मैं विप्रो के साथ कंपेयर करूं तो विप्रो इज हियर राइट नाउ, ये तोड़ के नीचे तक आ गया, ये लेवल तक, ये वाले जो लेवल है। तो वो उसकी कमजोरी दिखाता है। अभी आप देखो कमजोरी आती कहां से है? कमजोरी आती है फंडामेंटल से, राइट। तो अभी आप फंडामेंटल देखोगे विप्रो के तो देन यू विल अंडरस्टैंड, राइट। एंड देयर इज अगेन अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इश्यू निकला है, सो दैट आल्सो यू नीड टू लुक एट। इफ यू सी चेंज इन द प्रमोटर, 0.01% बेचा है यहाँ पे प्रमोटर, ऑल्दो इज होल्डिंग हैंडसमली 73%, दैट्स अ वेरी गुड holding, right? Although promoter is well reputed person here, right, Premajim ji, but there is allegation now on him that his trust has done some misproportion of funds. I do not know how much that allegation has a weight because he has donated so much of the funds. So from that perspective, now अगर यही इनको एक साथ में सारे जो आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी, माइंडट्री, ये सब ले लो एक साथ में, इन पैरामीटर्स को अभी आप यहाँ पे देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्यों ये महंगा है, राइट। अगर आप डेट टू इक्विटी के हिसाब से भी देखोगे तो सबसे ज्यादा डेट टू इक्विटी इसी की है, राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन among TCS, Infosys, SCL and Wipro, among these four, operating profit margin सबसे कम है इसका, और P रेशियो ठीक है, कंपैरेटिवली कम है, नो इश्यूज। PEG, प्राइस अर्निंग ग्रोथ, among all of them इसकी सबसे ज्यादा है, और हायर द PEG, हायर द ओवर वैल्यूड स्टॉक, राइट। तो ये हिसाब से भी ये महंगा है। अच्छा, अभी आरओसी आरओई के पर्सपेक्टिव से देखोगे सबसे कम है इसका, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के हिसाब से ठीक ठाक है, एचसीएल के कंपैरिजन में ज्यादा है, डबल, ऑलमोस्ट डबल के बराबर है, राइट।
और sales growth इसकी among all the companies is more for sure. So that's one good aspect of it. Now profit growth 19% की, that is fair enough. तो अगर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ इतनी अच्छी है, सबसे ज्यादा है, तो फिर डिविडेंड सबसे कम क्यों है 0.17%? So you need to look at all aspects. If you want, you can buy in a staggered manner Wipro, but again उससे अच्छी कंपनी अगर आपको मिलती है तो वो चूज करें, आपके पास में चॉइस है. आई डोंट चूज पर्सनली विप्रो एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट. लोअर प्राइस पे यस फेयर इनफ आप खरीद सकते हो, ठीक है. ये प्राइस पे अगर 400 के आसपास में है तो ठीक ठाक है, अदरवाइज नहीं ठीक ठाक है. मानसी मल्लप्पू अंगड़ी जी का सवाल है, रेडिको खैतान फॉर अ लॉन्ग टर्म. रेडिको खैतान आप एंट्री ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है रेडिको खैतान में, बट एक्सपेंसिव है. बट बाकी के जो ये सेक्टर के कंपनीज है ना, वो सबके सब महंगे ही होते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस हर हालत में चल रहा होता, चाहे लॉकडाउन होए ना होए, लाइसेंस मिले ना मिले, रेस्टोरेंट बंद है तो भी चल रहा है, चालू है तो भी चल रहा है, राइट. So look at which are the companies here. There are plenty of companies, right? United Spirits है, United Breweries है, अब Global Spirit है, GM Breweries है, तिलकनगर इंडस्ट्रीज या एसोसिएट. इन सब में से देखो कि फंडामेंटली कौन सा अच्छा स्टॉक है. अंडरस्टैंड हु द मैनेजमेंट ऑफ रेडिको खैतान. तो मिस्टर खैतान के बारे में पता करो. वी वर डूइंग अ केस स्टडी ऑन दिस, सो वी फाउंड एटलीस्ट द मैनेजमेंट इज ओके, सो not much of against them. Now, if you see from the perspective of fundamentals, already 978 में ये चल रहा है और 139 की बुक वैल्यू, that means it's trading 7 times. Mostly ये इंडस्ट्री में 6, 7, 10 times चल रहे हैं. So इंडस्ट्री के पी के एट पार, इट्स इनफैक्ट आस्किंग फॉर 2 पॉइंट मोर प्रीमियम, विच इज फेयर इनफ. नॉर्थ की काफी पॉपुलर कंपनी है लिकर में, सो दैट वे इट इज फाइन. बाकी के जो पैरामीटर्स हैं ठीक ठाक हैं. इसकी फेयर वैल्यू निकालें, अगर आप फेयर वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू नहीं आएगी इसकी, क्योंकि पी ऑलरेडी इसका बहुत ज्यादा है. पीईजी ऑल्सो इट्स वेरी क्लियरली टॉकिंग अबाउट द स्टोरी. मेरे ख्याल से 750 के आसपास की फेयर वैल्यू होनी चाहिए, मे बी लिटिल लेस. So from that perspective, it's expensive. But if you can hold, it's a great growth-oriented stock. If you can hold for a long period of time, it may still give you upside. 1100 में लिया हुआ है आपने. ओ so 1100 तो आई थिंक मेरे ख्याल से रेडिको खैतान का टॉप था 1100. Let me just open up. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पैसा डुबाएगा नहीं ये स्टॉक, एक बात पक्का है, बट होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. Now, if you look at the stock, I think one of the workshops last week we were talking about this stock and I said महंगा स्टॉक है. अगर ये नीचे ये लेवल के 1020 के आसपास में अगर ये लुढ़का ना, तो फिर बहुत नीचे तक लुढ़केगा, ये अपनी बात हुई थी. एंड on a target of 920 के आसपास का. So 920 के आसपास में you would see this stock will get stable. So that's a good price to buy. Malappa, what I would do if I'm in your shoes is from 850 to 920 I'll accumulate this stock in a good quantity such that मेरा 1100 का जो प्राइस है वो 1000 के नीचे आ जाए. एंड जैसे ही मैं ये स्टॉक वापस से 1100 1200 के आसपास में जाएगा, आई विल ऑफलोड पार्ट ऑफ द क्वांटिटी सच दैट देन इट इज इन अ balanced quantity in my portfolio, right? So money management is very crucial aspect of your investment, so you can do that. So long term के लिए no issues, you can accumulate it. Jubilee Food and FSL. प्रमोद जी, आपके ऑलरेडी मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ. I will see if I can answer it. I'm having a little difficulty because of cold and cough. मेरे को थ्रोट का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, बोलने में तकलीफ हो रही है. So I'll first take up others question and then if the time permits I will do that. Or what I would do is tomorrow I'll answer your question in our
STI ग्रुप, आई एम श्योर यू माइट बी पार्ट ऑफ आर STI ग्रुप, वहां पे आपको मैं आपके कंपनी का एनालिसिस करके दे दूंगा। तो मे बी वीडियो नहीं रहेगी, ऑडियो आपकी आपको स्टडी करना पड़ेगा, चार्ट के साथ में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। तो हम यहाँ पे रूपा एंड कंपनी देखते हैं। Rupa and company का fundament. See, always right, Atul. I cannot understand for what time frame you are looking. Maybe you are looking to buy on Monday morning and Monday evening. How would I know? Always give a time frame. जैसे somebody said a long term. Now, for my long term could be 3 years. His long term could be 5 years or 10 years or 20 years. Always define time frame. So let's say it's already trading more than 5.5 times. ठीक ठाक दिख रहा है फंडामेंटल, तो मेरे ख्याल से कुछ देयर इज नो ड्रॉप ऑफ डैश डैश, ठीक है। सो इट इज ट्रेडिंग at least 2 times of its fair value. If you see from the entry perspective, it's already in the distribution zone. It is not the price to enter, right? अगर आपको एंट्री का यहाँ पे चाहिए है तो you should be looking at the price of somewhere around this level. कौन सा 470, 450, 470 के आसपास में was the price now 529, राइट? तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव टेरिटरी में आप घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो कम प्राइस में लो, जब भी गिरेगा तब लो। स्टेक होल्डिंग देखो वापस, यहाँ पे FIDI की कितनी कम स्टेक होल्डिंग्स है, क्यों? बिकॉज दे विल नॉट बाई स्टॉक एट एक्सपेंसिव प्राइस एंड यू आर द वन। जील, मनीष डेडिया जी का सवाल है। चलो जील का चार्ट देखते हैं, और जील के चार्ट में भी हमने बात किया था लेवल्स का ड्यूरिंग वन ऑफ द सेशंस। कौन से सेशन में मुझे याद नहीं है। तो जील में भी हमने कहा था कि वी विल बी लुकिंग एट द लोअर साइड राइट। तो जील का हमारा जो टारगेट था ना फ्रेंड्स, वो 262 का टारगेट था। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था यहाँ पे, और मैंने कहा था कि ये लेवल टूटे ना, जैसे ही आप यहाँ पे शॉर्ट आना, तो ये शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे है। अब और अभी भी स्ट्रेंथ नहीं आई है जील में, खरीदने का अभी भी माहौल नहीं, खाली ये एक दिन हुआ है। ये एक दिन तब हुआ है जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, उन्होंने शॉर्ट कवरेज किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी भी जील अपसाइड में मत देखो, इट्स आई एम सीइंग द डाउन साइड ऑफ जील। टू व्हाट एक्सटेंट, अगर ये वाला जोन टूटा ना 250 250 से 260 का जोन टूटा, then you would see 190, ठीक है। There are a lot of controversies in ZEAL, issues है ना, सोनी हैज टेकन बोल के। अब मजे की बात क्या होगी पता है, अगर आप यहाँ पे इसका अभी पैटर्न्स देखोगे ना, ZEAL का शेयर होल्डिंग पैटर्न, लोगों को लगता है कि अभी इसको सोनी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसको चांद सितारे लग जाएंगे। लेट्स लुक एट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। प्रोमोटर्स 4% रह गए, FIs 44% थे, बढ़ गए FIs। नाउ FIs कौन है इसमें बढ़ने वाले? स्पेशली दोज FIs हु आर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ इट, ठीक है। DIs 11 से 20.87% में है, और पब्लिक बढ़ गई है। कंट्रोवर्शियल जगह पे पब्लिक को दूर रहना चाहिए। DIs के पास में पब्लिक का पैसा है, उनका खुद का पैसा नहीं है, हमेशा ये चीज को याद रखें। So look for a more downside on in ZEAL, ठीक है। Prakash ji, good evening. So let me take these. We got few more minutes. Jubilant Food देखते हैं। Jubilant Food Works शायद हमने लास्ट वीक में देखा था, राइट? Okay, so it's already trading how many times? सब लोग का पैसा इसी के पीछे भाग रहा है।
24.5 25 times बुक वैल्यू के ये ट्रेड कर रहा है. वेरी वेरी एक्सपेंसिव. लेट्स लुक एट द चार्ट. एक्सपेंसिव स्टॉक. अभी इसका चार्ट शायद ना खुले. ये जवाब दे गया. तो जुबिलियंट के चार्ट को हम यहीं से देख लेते हैं, राइट. तो जुबिलियंट should see a good downside. It's already a death crossover बना हुआ है. Further, it will be coming down towards let's say 2750 के लेवल पे. यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी. इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव शेयर. नई एंट्री न लें प्रमोद जी इसमें, ठीक है. शॉर्ट साइड और है इसमें. तो बची आपकी एफएसएल. एफएसएल का देखो, किस कंपनी को आप बोल रहे हो कि एफएसएल? Are you talking about First Source Solution? I don't know. All right. So please do write full form of the company so that I understand which company you're talking about. Many companies I'm not aware of. Many companies I'm not invested in. So I do not know about them. So one more way to ask the question is you can go in STI group, post your questions. We always look and come back here with the answers, right? तो आपको यहाँ पे भी एनालिसिस मिल जाएगा. All right, so thank you very much for spending the evening with me and asking your questions. I really appreciate. Today, because of the throat infection, I'm having little difficulty in speaking. So I'll close the session right here and look forward for next Saturday. So pray until then. And also look at the companies which will be benefited from the current budget, right? वो जगहों पे पैसा बनेगा आपको. Don't look at the companies which are too popular in media, जहाँ पर के टीवी वाले, पेपर वाले बहुत बात कर रहे हैं. वो कंपनी में पैसा नहीं बनेगा because वहाँ पे कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है. कोई किसी का माल किसी को चिपका रहा है. तो do avoid those companies. Do your own analysis. If you do not know, learn it. If you know to that extent, at least 50-60% आप cover करते हो, उसका 30-40% मैं आपको guide करता हूँ. तो definitely, together we can ensure that you avoid the dud companies or the penny stock companies or the operator driven companies. That's the first effort you should have to avoid a company which will sink your money, right? अगर आपने वो avoid कर लिया, losses avoid कर लिए, friends, definitely you will become wealthier. फिर प्रॉफिट आएंगे ही आएंगे. लालच में ना आए, ग्रीड में ना फंसे. ऑलराइट, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड.